We're live. Namaskar, Sarni. While I reach out to you from our homeland, India, we all know that this homeland has been associated with all our childhood play and enjoyment. We all know how important play is for children, but the benefits of playfulness are arguably even bigger for adults. A common theme across most forms of adult unhappiness is rigidity. For all our fancy educational attainments, steady careers, and big vocabularies, we adults tend to get stuck in our ways, often to our own long term detriment. Today's episode is focused on playfulness in our show called Samav Karav Gindunah. And to take us through this wonderful program, let me introduce the MC for today, and that is Jyoti Kak. She is currently residing in Faridabad, running a small garment manufacturing unit there, but someone who is really fond of music and dance. In the past, Jyotiji has been the radio host on Radio Sharda and also helped make a few teasers for koshurRAAG in the past. So, to take us through the event today, let me go straight to Jyotiji and welcome Jyotiji to our program, which is koshurRAAG here. So, please, over to you, Jyotiji. Thank you, Pavneesh ji. Hello, everyone. आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. First of all, I would like to thank you for giving me this wonderful opportunity to host this beautiful event. Good morning, good afternoon, and good evening to all our lovely audience, depending where they are connecting with us today. So, as a program शुरू करने ब्रों, छह बजे सान तो सारनी koshurRAAG organization के बारे में के वनन. koshurRAAG is a non-profit organization to inspire, promote, and support our upcoming Kashmiri artists by providing them resources, encouragement, and opportunities to learn and showcase their talent while augmenting their skills in India. Lalubatrayas lo lare, thandan lusum dohkyo raat, buchum pandit panne gare, sui me buchmas नश्तर साथ. सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज कार्यक्रम शुरू करते हैं एक गीत के साथ जो हमें सुनाने जा रही है अपनी मधुर और मीठी आवाज में उपासना पंडिता. ये अपनी संगीत की शिक्षा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्राप्त कर रही है और इसके साथ साथ ये एक ट्रेन क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर भी है. इनका सपना है ये इंडियन क्लासिकल संगीत में रिसर्च करे और एक प्रख्यात प्रोफेसर बने. सो वी ऑल विश यू बेस्ट ऑफ लक for your future, Upasana. Now over to you. थैंक यू. नमस्कार मारा सारनी. मैं koshurRAAG की टीम को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी गाने के लिए. तो मैं शुरू करना चाहूँगी. तुल नार छुम ललवुन मोरे कसमारविन शूरे पान तुल नार छुम ललवुन मोरे कसमारविन शूरे पान तुल नार छुम ललवुन मोरे मै माजरा छेनस कंद कोस्तूरे दद सत सिंतन नावान मै माजरा छेनस कंद कोस्तूरे दद सत सिंतन नावान सुई पान लुगमो रहमुसापुरे कसमारविन शूरे पान तुल नार छुम ललवुन मोरे कसमारविन शूरे पान तुल नार छुम ललवुन मोरे मै माजित्रानस सब कस दूरे ओखनन वुलनम मोरे
सुतुलनं नारतं बोरे कसमारविन शूरे पान तुल नार छुम ललवुन मोरे कसमारविन शूरे पान तुल नार छुम ललवुन मोरे माइल माजवाननम डक बड़कोरे वर्यो आंगन छे प्रारान माइल माजवाननम डक बड़कोरे वर्यो आंगन छे प्रारान रंग डोल आसम रोप कंदूरे कसमारविन शूरे पान तुल नार छुम ललवुन मोरे कसमारविन शूरे पान तुल नार छुम ललवुन मोरे तुल नार छुम ललवुन मोरे तुल नार छुम ललवुन मोरे। थैंक यू। तो अभी मैं अपना दूसरा गाना गाना चाहूँगी। ये लता मंगेशकर जी ने गाया है, तो इसका नाम है जिया ले गयो। जिया ले गयो जी मोरा सावरिया जिया ले गयो जी मोरा सावरिया लागी मन में लगन हुई बावरिया जिया ले गयो जी मोरा सावरिया लागी मन में लगन हुई बावरिया जिया ले गयो जी मोरा सावरिया ओ पपी है तूने पपी है नहीं देखे मोरे सैया देखे तो ले लेगा उनकी बलैया तूने पपी है नहीं देखे मोरे सैया देखे तो ले लेगा उनकी बलैया जार दीवाने मारना ताने पिया के सुन जाके बांसुरिया जिया ले गयो जी मोरा सावरिया लगी मन में लगन हुई बावरिया जिया ले गयो जी मोरा सावरिया पनी नी रे 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 मामा मद पम परे नी रे 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 मामा मदा दा सनी धनी पा सामने आए तो मैं आंखों में छुपा लूं थाम के भैया उन्हें दिल में बिठा लूं सामने आए तो मैं आंखों में छुपा लूं थाम के भैया उन्हें दिल में बिठा लूं शाम सवेरे पास हो मेरे गोरी के संग जैसे गागरिया जिया ले गयो जी मोरा सावरिया लगी मन में लगन हुई बावरिया जिया ले गयो जी मोरा सावरिया जिया ले गयो जी मोरा सावरिया जिया ले गयो जी मोरा सावरिया जिया ले गयो जी मोरा सावरिया। थैंक यू मारा। Thank you, Upasana. Wonderful. Really, it's great to hear your lovely voice. थैंक यू सो मच। Now, I would like to introduce our next performer. She is very talented and trained classical dancer. इससे पहले मैं आपको इनके बारे में कुछ ज़्यादा बोलूं,
मैं चाहती हूँ हम पहले इनकी डांस परफॉर्मेंस देखें। अरविंद जी, प्लीज शो अस हर डांस वीडियो क्लिप। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन, मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगी, जिंदा रहेंगी होके फना। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल। साथी रे मर के भी तुझको चाहेगा दिल, तुझे ही बेचैनियों में आएगा दिल। मेरे गीतों के साए में तेरी राहतों की खुशबू है, तेरे बगैर क्या जीना। मेरे रोम रोम में तू है, मेरी चूड़ियों की खन खन से तेरी सदाएं आती है। ये दूरियां हमेशा ही नजदीक हम बुलाती है। ओ पिया, Welcome back, PriyaLaxmi. What a lovely performance. Thank you so वैसे much. वैसे तो संगीत, नृत्य अपने आप में ही पूर्ण है, इसको किसी परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं चाहती हूँ आप अपने और अपने नृत्य के बारे में हमें कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जैसे कब स्टार्ट किया आपने, या इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले तो थैंक यू मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, जो मैं यहाँ पे आके परफॉर्म कर पाई। तो ये स्टार्टिंग हुई थी, आई वाज अराउंड 8 to 9 years ऑफ एज, जब मुझे डांस का शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक था। तो मैं ऐसे ही घर में टीवी वगैरह को देख के स्टेप्स कॉपी करती रहती थी। तो मेरे पापा ने मुझमें ये नोटिस किया था कि मेरा इंटरेस्ट कुछ क्लासिकल डांस की तरफ है। उन्होंने मेरे हैंड मूवमेंट्स देखे थे कि मेरे मुद्राएं वगैरह काफ़ी जाती रहती हैं, मैं ऐसे करती रहती हूँ, कुछ हैंड मूवमेंट्स करती हूँ। तो उन्होंने बोला था कि जब भी डांस सिखाएंगे तो यही कथक फॉर्म ही सिखाएंगे। फिर मेरी मम्मी ने मुझे डांस क्लास भेजा और फिर स्टार्ट हो। तो मैंने 4 years तो आपके कथक गुरु कौन है? मेरी टीचर यहीं रहती हैं, उनका नाम रीना मैम है। तो वो मेरे कांटेक्ट में भी है नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं, उनकी मैरिज हो गई और उसके बाद उनका मेरे साथ उनका कांटेक्ट नहीं रहा। बट आई होप कि मैं उनको कभी भी कांटेक्ट कर पाऊँ। बट मेरी डांस एकेडमी यही है, मैंने यही एंजल्स डांस एकेडमी से सीखा है। मैं शालीमार गार्डन में रहती हूँ, तो यहीं से मैंने जयपुरी घराना सीखा था कथक। Okay, thank you so much for your lovely performance. Welcome. So
Asiti Paknao Espanon program Broadcon. So now I would like to introduce Mrs. Hema Qazi. इनके बारे में मैं क्या ही बताऊं. She is a wonderful singer. बहुत जल्द इनका अपना भी एक एल्बम रिलीज होने जा रहा है, जिनकी डिटेल्स हम आपको बहुत जल्द सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे. प्लीज वेलकम हेमा काजी जी. One second. Namaskar. Am I? Namaskar ji. Thank you so much for this opportunity to perform. Anji, should I start? जी जी. I'll start with a shlok. Indra sev sharasanasya dadhati madhye lalatam prabha shoklim kanti manushna gauriv shira स्यातन्वती सर्वता एषा सो त्रिपुरा हृदिदुतिर्वोषांशो सदा हस्तिता छिन्दाना सहसा पदै सित्रभिर्गम् ज्योतिर्मयी वाङ्मयी. So I'll start with the Kashmiri bhajan. मुक्त कन तारक छिस तपदानस मुक्त कन तारक छिस तपदानस छम निशानस पोष पूजा मुक्त कन तारक छिस तपदानस छम निशानस पोष पूजा शमीशानस पोष पूजा. आकाश पोष वर्षुन हन हन छुस आकाश पोष वर्षुन हन हन छुस रथ बान कन छुस श्री देवता रथ बान कन छुस श्री देवता साइबान बनो मुत छुस आसमानस छम निशानस पोष पूजा साइबान बनो मुत छुस आसमानस छम निशानस
पोष पूजा छम ईशानस पोष पूजा गंगा सागर ह्यथ छस गंगा गंगा सागर ह्यथ छस गंगा बुध जालांछस दुपमाला बुध जालांछस दुपमाला लक्ष्मी मीछस दिवान दामानस छम ईशानस पोष पूजा लक्ष्मी मीछस दिवान दामानस छम ईशानस पोष पूजा छम ईशानस पोष पूजा नाबद आपरान महाविद्याछस नाबद आपरान महाविद्याछस करान जमनाछस वाव जवाब करान जमनाछस वाव जवाब दद मात सरस्वती सुछस पानस छम ईशानस पोष पूजा दद मात सरस्वती सुछस पानस छम ईशानस पोष पूजा मुक्त कन तारक छुस तपदानस छम ईशानस पोष पूजा साइबान बनो मुत छुस आसमानस छम ईशानस पोष पूजा लक्ष्मी मीछस दिवान दामानस छम ईशानस पोष पूजा द्वदमात सरस्वती सुछस पानस छम ईशानस पोष पूजा छम ईशानस पोष पूजा। Thank you, Hemaji. Thank you so much. Thank you. What a lovely bhajan. बहुत ही खूबसूरत भजन, मजा आ गया। Thank you so much. Thank you so much. Thank you जी। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ललब सायस सोमन बाग बरस ललब सायस सोमन बाग बरस पुछुम शिवत शक्त मेलित तथाव तैतलाई में कर्मस अमृत सरस तैतलाई में कर्मस अमृत सरस जिंदे मरस तो कर्म क्या। हमारे आज के गेस्ट हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनका नाम ही काफी है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे स्पिरिचुअल लीडर और शैव गुरु श्री वीरेंद्र काजी जी का। नमस्कार काजी जी, बचस तुहन वचवेंज स्वागत करा। सर आई थिंक आपका म्यूट है।
No, it's okay. Namaskar. You know, you had touched my heart because my first passion is lalwak. Before I proceed, bachpan se when I worked very hard for every sayings. Then with the help of one brahmachari Udayanath Tipu, an unnamed saint, in Jalandhar we worked and produced a cassette. Kabhi aapne dekha hoga, pack of double cassette, Lalwak by V. Qazi, sung by Arti Tipu Koul. जी जी. So I have been very keen. Young generation, koi bhi lalwak sune, every wak I have mastered. What is the meaning of wak? The subtleties of the wisdom. And then we did a ballet also. Okay. Yogini Laleshwari in Kamari Auditorium. तो आपने कहा लाल बचाया क्या बनता है? लाल बचाया सोमन बागवरस. You know. Vuchum Shiv Tishakt Milit. Milit ba. मतलब we had done in Hindi. We had translated lalwak in beautiful Hindi. Okay. तो you know, but पिया को खोजते मैं निकली, सुरना रही कब ये दिन बीता कब ये रात गई, आखिर मिले अपने ही घर में. You know, I got fascinated. So मैं निकली. It's a deep, profound knowledge. I rather appeal to my all Kashmiri brother. Yeah, please seeko. It's a complete sense, and Laleshwari Lalwak gives essence of Kashmir Shaivism. Yeah. You have seen my teaser. Now you want me to? I'll speak few words on Kashmir Shaivism. Yeah, just Arvin ji, please. I will speak few words on Kashmir Shaivism. Before that, please Arvin ji, आप वो clip कर दीजिए. That will be good. दम दम ओमकार मन परनोवुम पानय परांत पानय बोजान सुहम पदस अहम गोलुम तिल लल्ब वर्सस प्रकाश हथाल. गूगल है दैन्योन तत्जोन गुरवान चत्रमर्ष दित्तिमान भगवानो थैंक यू अरविंद जी. बहुत जल्द इनका ये एल्बम भावपोश के नाम से रिलीज होने जा रहा है. और वीरेंद्र जी, थैंक यू सो मच. तो आइए हम इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें कश्मीर शैविज्म के बारे में. ओवर टू वीरेंद्र जी. Udyamo Bhairava. This is from the first awakening of Shiv Sutras. What it tells us about the principle of Shaktipat, that is descent of divine grace. It is irrespective of human effort. We will get transformation by His mercy, not by our efforts. So what he says, when Bhairav does the Udyam, when Bhagwan Shiv ki kripa hogi aapke upar, all your bondages, all your immunities, everything are destroyed in a flash and you get transformed. So this is one of the essence of Kashmir Shaivism. That is the principle of Shaktipat. Now, our scriptures like Bhagavad Gita, Shiv Puran says that whenever there is decline of dharma, adharma gets more manifested. What happens? The divinity creates a avatari purush, a divine person in the human form, to enlighten the world and bring them again on the correct path of dharma. They say in the beginning of Kali Yuga, what happened? Adharma became prominent. There were great sages, saints, tapasvanis, mystics. They got secured at the beginning of Kali Yuga. They say, oh, we have no role to play. The Kali Yuga has own priorities, own administration, own rules. They say great sages and saints went into hiding. They went all into hiding. Now, what will happen to this world? Lord Shiva is ever merciful. He initiated sage Durvasa in Mount Kailash. Lord Shiva assumed the form of Shri Kantanatha.
and initiated sage Durvasa into Shaiva Agamas. And after initiating sage Durvasa into Shaiva Agamas, Sri Gantanatha disappeared. Then what happened? Durvasa got all the knowledge. Now he wanted to impart this knowledge to people. He did not find any worthy disciples. Very interesting. So he created mind-born son called Manasputra. His name was Trambakanath. He initiated his mind-born son into the Shaiva Agamas. He also created mind-born daughter, Trambakaditya. That means a feminine has in Agamas equally more good role, rather a little higher role to play in the awakening. So he created Trambakaditya and taught her in the Kaula practices. Then this mind-born son tradition continued, and one of the father-son tradition continued afterwards. They say on 15th Siddha was not able to produce a mind-born son. He was advised to marry, and then father-son tradition continued. And in 8th century, a great awakening was created by sage Vasugupta in the form of Shiv Sutras, which is nothing but how to go back to the Godhood. I do explain that in detail. Now, after Vasugupta, the great sage, miraculous sage was there, rather Shiv Avatar, Acharya Abhinav Gupta. You know, these days you must be hearing that Abhinav Gupta Jayanti, we are celebrating his 1100 years of Abhinav Gupta seminars, other thing. He was a divine incarnation. He was not only apt in spirituality, in Shastras, Tantra, every field. He was a master of Natya Shastra. If a graduate student reads Natya Shastra, he reads Bharata Muni's Natya Shastra. But if he's a MA student in Natya Shastra, he will read Abhinav Bharati, that is commentary on Bharata Muni's Natya Shastra by Acharya Abhinav Gupta. Then he was on the aesthetics, Rasa, Dhani Loka. He has given the greatest contributions by Acharya Abhinav Gupta. Then in modern way, Swami Ram was a great Siddha. He was produced, and his Shisha was Mehtab Kak, and Mehtab Kak's Shisha was Swami Lakshman. He carried this tradition, and mostly all the wisdom is with foreigners. John Hughes and company, you know, the Universal Shiva Foundation, they recorded every word of Swami Lakshman. That's how this knowledge came down. Now, what is Kashmir Shaivism? In short, Kashmir Shaivism is a universal spiritual philosophy. It stresses on the supreme unity of the self with the God. It accepts all the aspects of life in totality. It talks about diversity, and it says how you get realization only by Anukampa, by his divine grace. It focuses on realization based on divine grace. So there are four interesting features of Kashmir Shaivism. Universal spiritual philosophy, beyond caste, creed, color, anybody is welcome in Kashmir Shaivism. And he says, supreme unity of the self with the God. You will discover when you go in the sadhana, literally initially also, you will say, I'm not away from God, I am part of the God. So this is a realization. You are the supreme unity of the self with the God. You are part of the divine. Third feature is diversity. God has made everybody differently. And I will tell you, Kashmir Shaivism is the most wonderful creed to unite the whole world through spirituality, because we focus on the diversity. And again, I said, the fourth feature is the divine grace, how you can get realization only by divine grace. Now, these days, I was talking about Abhinav Gupta. Currently, Kashmir Shaivism is impacting all the current spiritual traditions. This holiness, Shri Ravi Shankar, you know, he's teaching Shiv Sutras, his Vijnana Vairava meditation. In fact, a lot of my friends who do a course with Shri, they also want a little bit more brush up, because originally it's from Kashmir tradition, Shaivism. Lakshman has taught. So that's also one of my, we should be thankful to Shri because at least marketing of Kashmir Shaivism is done through him. Now, I also teach, hold my camps on Vijnana Vairava meditation. And as I said, I'm grateful to many great sages,
mystics and masters, they have initiated me in the practical side of Kashmir Shaivism. And mainly they have focused on the holistic transformation of common people. Because in my teaser, I said the divine light, divinity is in everybody. Nobody is away from God. So he said, you must focus on the common people. So every common people is welcome. I tell people, please come to me as you are with all your ups and downs. No special restriction, just you come to me as you are. But just first focus on your, I said, you give me 3 gifts. What are those 3 gifts are? Humility, love, and compassion. So please remember, the first entrance to Kashmir Shaivism is that this should be your nature. You must not only imbibe, these must be your nature. Humility, love, and compassion should be your nature. Because, Swami Lakshmanji was kindly, he has a great, he said, ever experience about his teacher's father. They say he was in Ganpatiyar. He was a great Siddha and great teacher. That he was sleeping in his bedroom, and this a thief came to his bedroom. Thief came to his bedroom. He was shuffling the books. He kuch paisa milega, kuch sona chandi milega. Then he saw that this thief is engaged. He said, "Thank you." Okay. Hata trai. Ogya atha triki se. Kya chine parwa. Meache chandas no zropai. Bahadi maise. So there's a power of compassion. And second, I will tell all my friends, please have 100% faith in yourself, because Lord Shiva is within you. If you don't have faith on yourself, you won't have faith on others. Secondly, I will say, you must 100% love yourself. You are a temple of God. Be well dressed, eat well, take care of your body also. And third, I will say, leave everything to God. What will happen tomorrow, next moment? If you leave it to God, Lord Shiva, everything will be fine. Even if there are some impairments, they all will be taken care of. We say like, "Hum moorakh jo kaam mein bigade, Ramo kaaj banaiye." We'll only mess up things. God will transform us. And thank you, Virendra ji. Now, 1 second, I want to add. 16th and 17th July. I have level 1, this 2 days learning course. Everybody is welcome to join that. It is Indian time, 7:30 to 11. Om Namah Shivaya. Anything. Thank you, Virendra ji. Thank you so much for sharing such fruitful knowledge with us. जो हमारे आज के नव जनरेशन खातिर वारिया जरूरी। हम यहाँ आपको बताएं कि बहुत जल्द ही एक वर्कशॉप कंडक्ट होने वाली है जुलाई में, और जिसके डिटेल्स हम आप सभी के साथ शेयर करेंगे हमारे सोशल मीडिया पर। थैंक यू। कश्मीर शैव धर्म के अनुसार सृष्टि भगवान शिव का एक लीला है, जिसमें वो हर चीज के समान रूप से मौजूद है। उन्हें पर भैरव भी कहा जाता है। प्रत्येक प्राणी अनिवार्य रूप से भगवान शिव है, लेकिन सीमाओं के साथ। केवल मनुष्य में ही हमारी सहज शिव प्रकृति को साकार करने के लिए योग्य अभ्यास के माध्यम से सीमाओं को हटाया जा सकता है। हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपने नए परफॉर्मर को, जो कि है अंतरिक्ष कौल। ही इज ऑल्सो ए डांसर। इनका स्टाइल है क्रम्पिंग एंड हिप हॉप। ये डांस पिछले 4 साल से सीख रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू डू एक्सेल इन हिज स्टाइल and his dream is to represent India. So we wish you all the best for your future. Please Arvin ji, इनका डांस वीडियो क्लिक कीजिए। Batman put up all like that. Light up the place, watch the crowd increase. Them ball out, oh what a night. बल्ले कह के ओ नचदी है तेरा टपड़ो है तेरा नचड़ो। शावा शावा कह के ओ नचदी है तेरा टपड़ो है तेरा नचड़ो। अड्डियां चक के नी लकड़ू कमावे, पैरी नी पंजे बाबा के नच के वखावे। बोलियां मैं पावां तेरे सामने नी आके, एक ठुमका तेरा नी पूरे क्लब नू हिलावे। सोहणिया सजना वे एक गल नी सुना, तातू तू शर्मावे जदों सामने होवा।
नो सुरमा है तेरा तुड़ना है तेरा मुड़ना लम्बे काले वाल तेरे लगदे कमाल में साडी तू जिंदगी तू साडी जिंद जान में शहर विच आके नी तू पाए नी पहचान में तेरा हसन है कि दिल करावे सोने सजना वे एक गल नी सुना तू तो शर्मावे जदों सामने हो छड्ड दे तू सारे गम महबूबा मेरी बन सारा कुछ भुल के तू साडे नाल नच नच ले साडे सामने तू मिलो रानी दी नच ले तेरे ते असी जान Thank you, Antariksh, for your lovely performance. It's a great. कहाँ से आप सीख रहे हैं? नमस्कार। तो पहले तो मैं कोशराग को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कश्मीरी आर्टिस्ट को। तो मैं डांस पिछले 4 साल से कर रहा हूँ और जम्मू में डांस स्टार्ट किया था आई वाज द एज ऑफ 14 आई गेस। तो तब से डांस कर रहा हूँ और धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता गया, तो बाहर एक्सप्लोर भी किया, बाहर का एक्सपीरियंस भी लिया। आई एम बेसिकली अ अंडरग्राउंड आर्टिस्ट, जो हम अंडरग्राउंड में बैटल्स वगैरह करते हैं। आई एम वन ऑफ देम। सो बाहर एक्सपीरियंस लिया, दिल्ली का एक्सपीरियंस लिया। दिल्ली के आर्टिस्ट जम्मू में आए, उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, अपने सीनियर्स से एक्सपीरियंस लिया। तो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी टिल नाउ। जैसे आपने लिखा है कि आपका जो स्टाइल है वो है क्रम्पिंग है, हिप हॉप है, तो इसी में क्यों, मतलब बाकी भी तो स्टाइल्स है इतने सारे, आपका इसमें रुझान क्यों इतना रहा? जब 14 साल की उम्र में डांस किया था, तब हिप हॉप से नॉर्मल डांस किया था कि जो शादी में बच्चे डांस करते हैं वैसे ही किया था। और गाना सुन के अच्छा लगा दिल में, कि मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो फिर मैंने मेरी बड़ी सिस्टर भी डांसर है, वो भी डांस करती है, तो मैंने उनसे मतलब इंस्पिरेशन लेके मैंने एकेडमी ज्वाइन की। फिर मैंने एकेडमी ज्वाइन की तो मुझे सब स्टाइल्स करवाते थे, वहाँ बच्चा था तो मैं सब स्टाइल्स करवाते थे थोड़े थोड़े। तो फिर उन्होंने, जब मुझे थोड़ा मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि पहले मैंने हिप हॉप देखा कि हिप हॉप अच्छा है, कोरियोग्राफीज अच्छी है, ये सब मैंने किया। तो फिर धीरे धीरे मतलब फ्रॉम पास्ट 1 ईयर मैं क्रम्प एक डांस स्टाइल है जो हमने अडेप्ट किया इंडियंस ने बाहर से, फॉरेन से, क्योंकि बाहरी इन्वेंट हुआ था तो इंडियंस इंडिया में आया। तो मुझे 1 साल हुआ है क्रम्प किए हुए। इसमें क्रम्प इज ऑल अबाउट इमोशंस, जो दिल में इमोशंस होते हैं वो हम बॉडी में डालते हैं। तो बस और कुछ नहीं है, इंस्पिरेशन धीरे धीरे आते गई और मेरे को 2 स्टाइल अच्छे लगे, अब मैं वही करता हूँ। मुझे आगे कर सकता हूँ मैं, बिल्कुल और भी कर सकता हूँ ट्राई, बट अभी के लिए 2 ही है जो है। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जो आपने सोचा है वो आपको मिले। सो दम दम ओमकार मन परनो पाने परांत पाने भोजान सोहम पदस अहम गोलुम तेलिलेलिवर्सस प्रकाश सथान. Program ook eindwaat nou bro. Chesbe to isani darshakan the performance be eklet shukriya karan. Now over to Mr. Arvin ji, ending this show with further details regarding our next koshurRAAG events. Over to Arvin ji. Thank you. Namaskar, Sarni. Jyoti ji, thank you so much for emceeing, hosting this event. As you rightly said, our goal, our objective is to not only showcase our artists, but also support them in whatever way they would like us to support. You know, Right. monetarily, resources, instruments, platform, you know, studios, cover songs. We are asking artists, how can we promote you? Give us ideas, because these youngsters have a lot of good ideas, so they can give us those ideas about ki mujhe ye karna hai, mujhe wo karna hai, so we can produce more songs. Some of them would be cover songs, some would be original songs. Dr. Pavneesh Madan, who takes the pillar of music for koshurRAAG, is working on a couple of new songs in Kashmiri, because as you know, we have only so many songs in Kashmiri, and we need to produce more.
And we have a lot of lyricists in our community who are providing that kind of content for the songs. We are also partnered with a few of the in Jammu, as a matter of fact, with some of the studios who can actually now go to the next level from more of audio to more visual, more videos, more dynamic videos, not just in the studio, but also the studio, more drone with the drones. We can have more of these new videos coming up. I would like to thank every artist today and who has performed or whose video we saw today. As you saw that, all these artists, the young people have so much talent, and for the talent to be exposed, to be showcased, they need a platform. And we are doing our as much we can do to bring these artists, on our platform. We have a pipeline of almost over 150 artists, coming soon on koshurRAAG. Oh, wow. So we want to bring all of these people and let them also see what quality means, because quality is very relative, right? Quality for somebody is like, okay, मैं अच्छा गाना गाता हूँ, तो just because my mom and dad say that I sing very well is different than when other people say how good you are as a singer or as a vocalist, as an instrumentalist, as a dancer, as a poetess, or as a rap artist or a stand-up comedian. So everything, the tarif bahar se aani chahiye, tarif apnu se nahi aani chahiye. So it's very important that these kids also learn from other artists, what quality really means. And koshurRAAG being a platform where we will bring them in here, and then they can go to the next level, jahan pe hopefully they get into Indian Idol or the Voice of India or other platforms in India where they can perform. So also want to touch on our December event for the koshurRAAG cruise. So we'll be sending information, next week regarding the cruise registration. We have a dedicated, agents now for koshurRAAG cruise. So we'll share the phone number and the email, because since this cruise is very customized, so it's not possible for IT to customize that application on there. People just can go and log in and just log. Okay. So we would have people actually talking to them, and they can customize. Do they need an ocean view? Do they need a inside cabin? When we go to the Bahamas, do they need have an ocean view of their room, or they have a island view of the room? We'll share all the information coming soon, and let everybody who has. First of all, thank you for those people who have. A lot of people have signed up in our registration link, which is a kind of an informal link just to see how many people are interested. We have tons of people who are interested now. So there's no early bird as such. So we are negotiating with O'Neill Khosa, who runs the cruise line in West Palm Beach. And we are actually negotiating the number so that it stays consistent. It's much easier for them to, put everybody on the ocean view. If you're in the ocean, let everybody get the ocean view. So we'll get more information on the koshurRAAG cruise very soon. Stay tuned for upcoming events. We have in July, August, September, and also stay tuned for some more songs coming up. Some cover songs from our artists and some really original songs from our Kashmiri songs from our artists. So stay tuned. And Jyoti ji, again, thank you so much for your time. I know it's almost 10 o'clock, 10:30 in India or something like that. So everybody, have a great evening, good night, and namaskar to everyone. Thank you so much for joining. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot for this wonderful event. Thank you.